Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining types of lipids. So let's move to the whiteboard. So dear students, we have discussed number 1, the acyl glycerols. That has been discussed. The second class which we are going to discuss is the waxes. First of all, I'm going to define it, then we'll move on. So waxes are mixture of number 1, long chain alkanes. अल्केन्स का तो पता है डियर स्टूडेंट्स आपको, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है. लॉन्ग चेन अल्केन्स which are having odd number of carbon atoms ranging from 25 minimum to 35 maximum. Clear? So that is the number they have. The long chain alkanes, और उसमें alkanes में जो नंबर होगा कार्बन का वो ऑड होगा. फैटी एसिड में हमने पढ़ा था, उसमें जो कार्बन नंबर एटम्स होते हैं वो इवन में होते हैं, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 30. जबकि वैक्सेस में जो उसका फर्स्ट कंपोनेंट है, जे वी हैव स्टडीड दैट वैक्सेस आर मिक्सचर. तो ये मिक्सचर है किस किस चीज़ का? उसमें से पहली चीज़ है लॉन्ग चेन अल्केन्स. नाउ द सेकंड component is, the component of this mixture is alcohol. The third component is the ketones, and the fourth component of waxes is esters of long chain fatty acids. Clear? तो ये 4 चीजें मिलकर ये जो मिक्सचर है, that makes a wax. Clear? Now, the waxes are widespread as protective coverings of fruits and leaves. Clear? And dear students, some animals also secrete wax. तो पहली बात तो ये बहुत सारे जो वाइड स्प्रेड इसका जो यूज़ है कि प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स और जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर कवरिंग होती है, और वो कवरिंग किस शक्ल में होती है आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है इसका लिपिड्स को उसमें बता चुका हूँ. वो क्यूटिन जो कि क्यूटिकल के ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है दैट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस. और इसी तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं, दे ऑल्सो सेक्रीट वैक्स. फॉर एग्जाम्पल, एक का तो नाम आपने सुना होगा, दैट इज द हनी बीज.
the honeybees. They form two things. Number one are the wax, and number two is honey. Clear? तो जब भी हम शहद के छत्ते में देखते हैं तो उसमें ये दोनों चीज़ें सिंथेसाइज कर रही होती हैं। एक तो हनी यानी शहद, और शहद किसके अंदर होती है? वो जिस छत्ते के अंदर होती है, जो शहद का छत्ता होता है, जो हनी कॉम्ब कहलाता है, दैट इज मेड अप ऑफ वैक्स. सो दिस एनिमल secretes wax. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इन ह्यूमंस the serominous glands along with sebaceous glands secrete the sebum. Sebum is secreted by the sebaceous glands, that is oily secretion. While cerumen, it is secreted by the serominous glands in ear. हमारे ईयर्स के अंदर, कान के अंदर आप देखेंगे तो वैक्स होती है, ठीक है. सो दिस सेरोमिन और वैक्स, इसका दूसरा नाम है वैक्स, दैट इज इट्स proper name, cerumen, or commonly it is called as wax, is protective in function. ये ears को protect कर रही होती है. Also prevents microbial invasion. तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे जो ईयर का है, एक्सटर्नल ईयर, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना कॉज कर दें, तो ये उससे बचाती हैं वैक्स. इसी तरह से वन मोर थिंग, द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, और उसमें है इंसेक्ट्स. चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया, इंशाल्लाह उसमें डिटेल से पढ़ेंगे. फाइलम आर्थ्रोपोडा, द ज्वाइंटेड अपेंडेजेड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि हमारे, हालांकि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं. तो इनके जो एक्सोस्केलेटन होता है, द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, स्पेशली द इंसेक्ट्स, कंटेन अ वैक्स लेयर over the exoskeleton. तो एक्सोस्केलेटन के ऊपर ये एक लेयर होती है जो कि इनके एक्सोस्केलेटन का हिस्सा ही होती है, दैट इज वैक्स. और ये वैक्स जो होती है कि एक तो इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, मतलब कि दे फंक्शन एज हैविंग बीइंग इन्वर्टेड बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स. दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस वैक्स में से इन्वेट कर और इनके अंदर नहीं जा सकते, वैक्स को अपोज करेगा. और दूसरे नंबर पर ये वाटर लॉस को भी बचाते हैं. इसी तरह से इन प्लांट्स द वैक्सेस प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस एंड abrasive damage. So abrasive damage या abrasion, जब भी किसी फ्रिक्शन से, रबिंग के जरिए कोई जो है वो चोट पहुंचे तो उससे abrasive damage कहा जाता है. सो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर भी ये मुख्तलिफ तरीके से इसको बचाती है.
and it also acts as water barrier in birds and some other animals like sheep. क्लियर? तो इनके अंदर ये इनकी बॉडी से कहीं बाहर से कहीं वाटर इनके अंदर ना एंटर हो जाए तो उसके एक बैरियर के तौर पर, वाटर बैरियर के तौर पर ये वैक्सीज इनके ऊपर काम कर रही होती है. सो होपफुली ये क्लियर हो गया. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ लिपिड्स इज which we are going to discuss is phospholipids. So what are phospholipids? The phospholipids are the derivatives of phosphatidic acid. Clear? So phospholipids, they are the derivatives of phosphatidic acid, and the phosphatidic acid is composed of, तो पहले हम देखेंगे कि फॉस्फेटिडिक एसिड क्या है और फिर हम देखेंगे कि उसके डेरिवेटिव्स में किस तरह से मिलकर ये फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं. तो फॉस्फेटिडिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, फिर उसके बाद उसके डेरिवेटिव्स को साथ अटैच करके और फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो फॉस्फेटिडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 glycerol, that's a 3-carbon alcohol. Number 2, there are 2 fatty acids, and number 3 is 1 phosphoric acid. Clear? इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है phosphatic acid. And how they form the phosphatic acid? Here is glycerol, CH2, CH and CH2. यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH होता है. इनके जो OH है वो 2 फैटी एसिड्स के और 1 फॉस्फोरिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ से वाटर को रिमूव करेंगे एंड दे गेट लिंक्ड. तो ये एक तो ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है. और ग्लिसरॉल का दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, कार्बन 3. So attached with the first 2, ये पहले 2 कार्बन्स के साथ there is attached one fatty acid and the second fatty acid. ये 2 फैटी एसिड्स हो गए. यहाँ पर मैंने 1 प्राइम और यहाँ पर मैंने 2 प्राइम लगाया. ये 2 फैटी एसिड्स जो होते हैं ये इट इज जस्ट टू डिफरेंशिएट, दिस इज द फर्स्ट फैटी एसिड एंड दिस इज द सेकंड फैटी एसिड. और तीसरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर अटैच होता है एट कार्बन नंबर 3, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, H3PO4, ठीक है. सो OH and OH, क्लियर. और इसका ये देखें
H3 एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीसरा यहाँ पे था जो इसके OH के साथ मिलकर वाटर रिमूव हुआ, और H3P, ये एक P और O4, 1 2 3 and 4. Clear? So this is the formula of phosphatidic acid. Clear? तो ये तो अभी सिर्फ फॉस्फेटिडिक एसिड पड़ा, जबकि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, जो कि लिपिड्स की टाइप है, वो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं. द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड आर कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स. सो कौन से इसके डेरिवेटिव्स हैं? द डेरिवेटिव्स ऑफ phosphatidic acid are 3 nitrogenous bases, that is choline, ethanolamine, ethanolamine and serine. So these are 3 nitrogenous bases. इनमें से कोई एक डेरिवेटिव जो है वो फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ अटैच हो जाए, सो इट बिकम्स फॉस्फोलिपिड. सो हाउ इट इज, आइए अब देखते हैं. इसको मैं मेंशन भी करता चलूं. सो दिस इज ग्लिसरॉल और these two are the fatty acids, and this one is phosphoric acid. Clear? और dear students, now its derivatives. So किस तरह से बनेगा ये? Here again CH2, CH and CH2 इसके साथ यहां पर अटैच हैं. The first fatty acid, the second fatty acid 2 prime, and number 3 the phosphoric acid, और यहां पर इसके साथ अटैच है द नाइट्रोजनस बेस choline, CH2, CH2 N CH3 whole thrice. So this structure is of choline. So now this structure becomes, ये phosphatidic acid था, इसके साथ हमने अटैच किया choline को. That one structure was phosphatidic acid. Now it collectively becomes, ये सारी चीजें मिलकर क्या बना देंगी? phosphatidyl choline. And phosphatidyl choline, this is the most common or widespread phospholipid. Clear? The phosphatidyl choline. और dear students, phosphatidyl choline का एक और भी नाम है, इसे lecithin भी कहते हैं. It is also known as lecithin. And here I am going to draw its map diagram. इस तरह से भी हम इसको ड्रॉ करते हैं, और होपफुली आपको अभी याद आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर आप कहाँ देखते हैं. So this is polar hydrophilic region
that contains phosphate and this is non-polar and hydrophobic region that contains the fatty acids. Clear? तो ये इसकी डायग्राम. Now the phospholipids are widespread in bacteria and animals and plant cell membranes. चैप्टर नंबर 4 में डिटेल्स के साथ सेल मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा. थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है आपका, आप प्रीवियस डिग्रीज में पढ़ के आ चुके हैं. आपने वहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें आपने इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, याद आया आपको? इस तरह से लिपिड बाइलेयर, याद आया आपको डियर स्टूडेंट्स? तो ये लिपिड्स है. और तो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा लिपिड है? दैट इज द फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, या जिसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास ऑफ लिपिड्स. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.